Hello beauties, welcome back to my channel. In this video I'm going to show you how you can make your own homemade beetroot powder without any chemicals. So let's start. For that, obviously you need beetroot. As much as you want to make, you take beetroot as per that and उसको ऐसे पील कर लेना है. जब तक मैं पील कर रही हूँ एंड कट कर रही हूँ तब तक, एंड उसको कट करके ग्रेट भी करना है. जब तक मैं कट कर रही हूँ मैं बीटरूट का बेनिफिट्स भी बता देती हूँ. Beetroot is rich in antioxidant. It aids in anti-aging and also brightens up the skin. It is rich in vitamin A, B and C, and also has minerals like potassium and magnesium in it, and also iron, which is very beneficial for the skin. There are several beetroot powders that are available in the market which contains harmful chemicals and preservatives and several other stuffs which are not that good for the skin. And when you can make beetroot powder at your home with easy steps, then what more do you need? It is very easy. Just peel the beetroot and cut it into pieces like I am doing, and then simply you need to grate it. You can see the natural color in it. You don't need any artificial color. In the market there are many beetroot powders available. We don't know which is real and which is artificial, so just simply grate the beetroot, and I have just taken 2 beetroots. You can take as per your requirement. So after grating the beetroot like this, आप देख ही सकते हैं मेरा हाथ कैसे कलर हो गया एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. देन सिंपली पुट अ पेपर इन दिस काइंड ऑफ प्लेट. एनी काइंड ऑफ प्लेट यू कैन टेक. आई हैव टेकन दिस होल वाला प्लेट बिकॉज इट विल हेल्प इन ड्रेनिंग आउट इफ़ देर इज़ रिमेनिंग वाटर एंड स्टफ. सो मैं ऐसे इसको फैला के, इसको ऐसे प्लेट के ऊपर पेपर रख के फैला दूंगी एंड इसको धूप में सुखा दूंगी. धूप में 2 दिन सुखाने के बाद, अभी तो गर्मी चल रही है तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है. सुखाने के बाद ये पूरा ऐसे ड्राई लीव्स की तरह हो जाएगा, हार्ड एंड सिंपली आपको क्या करना है, इसको लेना है एंड यू सिंपली grind this thing. When you grind this will change into a very powdery like stuff. Now it will look like blackish, but don't worry, when you powder it will turn full pink. And now you can see the result. It is fully pink, and you then strain it. If there are harsh particles, then you strain it, and if there are no harsh particles, then you can simply use this. Now your beetroot powder is ready for use.